In this video, we're going to talk about hill climbing search. And hill climbing, जैसे कि अपने नाम से जाहिर है कि and it's a very good quote that I like from the book. It's like climbing Everest, Mount Everest, in thick fog with amnesia. Thick fog का मतलब ये है जनाब कि you cannot see what is around you. Around maybe कि you can see yourself and where you're standing, but not much around you. तो again आपकी जो vision है, it's very local to your position. एंड एमनीशिया का मतलब जनाब यू डू नॉट रिमेम्बर कि जहाँ पे आप पहुंचे हैं वहां पे आप आए किस तरीके से. This sentence encompasses what hill climbing is all about, and what you're trying to do is to get to as far of a position as possible. ठीक है, तो आप हिल क्लाइंबिंग और जनाब यू वांट टू रीच द टॉप ऑफ एवरेस्ट, एंड इन डूइंग सो यू डू नॉट रिमेम्बर कि आप जहाँ पे आए वहां पे आए किस तरीके से, एंड यू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अदर देन वेयर यू आर एट, कि आप अपनी जगह पे जहाँ मौजूद हैं उसके अलावा आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए अवेलेबल जो है वो भी नहीं है. ठीक है, तो हाउ डज हिल क्लाइंबिंग वर्क? तो अगेन बेसिकली हिल क्लाइंबिंग का जो बुनियादी मकसद है, फॉर एग्जाम्पल तो इफ इट्स एट अ पोजिशन लाइक दिस, तो दिस इज अ करंट स्टेट एंड it will only accept a neighboring state if neighboring state is a better state than the current state. So again, so if the main thing that you will notice over here, you will receive a problem as an input, and you will return a state that is a local maximum. A local maximum could also be the global maximum, by the way. So okay, local maximum like आपको इससे अच्छी वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, but this could also be the this could also be the this could also be the global maximum. Okay, so you have a problem. So you have a you have two things that you will keep into account: the current node and the neighboring node. So initially क्या करेंगे जनाब के, you will have the current node initialized by the initial state of the problem. ठीक है, and then you will do the following till you do not find a better node. So you will find a neighboring node, ऐसा नोड जो कि आपके करंट स्टेट से एक के फासले पे. ठीक है, अगर जो नेबरिंग नोड है उसकी वैल्यू, ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो करंट स्टेट की वैल्यू से ज्यादा कम है, तो उसको इग्नोर कर दें. ठीक है, एंड सेलेक्ट अनदर नेबर. ठीक है, अच्छा अगर नहीं है ऐसा तो देन यू विल रिप्लेस द नेबर विद द करंट नेबर. ठीक है, तो अगेन आपको अगर कोई ऐसी वैल्यू नेबर मिल रहा है जो कि बेहतर नहीं था, तो यू विल रिटर्न कि आप करंट स्टेट को रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड अ बेटर नेबर. ठीक है, यू ऑपरेट नेबर को आप रिप्लेस कर देंगे करंट स्टेट, तो इवेंचुअली इट विल गेट स्टक जहाँ पे उसको उससे बेहतर वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी. ठीक है, दिस इज हिल क्लाइंबिंग सर्च. हिल क्लाइंबिंग सर्च जो है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज बेसिकली द ह्यूरिस्टिक वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो स्टेट्स गिवन है, आपको अगर मैं दो स्टेट से दिखाऊं एंड क्वीन प्रॉब्लम की, स्टेट लाइक दिस, queen over here, a queen over here, a queen over here, and a queen over here. एक स्टेट ये है, तो लेट्स कॉल द स्टेट S1, and let's make another state. So queen over here, a queen over here, a, a queen over here, and a queen over here. Let's suppose that this is another state. Let's call the state S2. Then how would I define कि which state is the better state? मैं कैसे बताऊं कि जनाब S1 अच्छी है, S2 अच्छी? What we need for that is what we call an objective function. So objective function क्या है? Basically it gives you an idea कि जनाब के कौन सी state जो है वो बेहतर state है as compared to another state. तो one objective function could be for n queen problem is the number of attacking queens. तो बेसिकली मैं काउंट कर लूँ कौन सी क्वीन कितनों किसको अटैक करी, तो लेट्स काउंट दिस थिंग. सो क्वीन वन अटैक करी क्वीन टू को, लेट्स वन वन अटैक. क्वीन वन अटैक कर रही क्वीन थ्री को, इट्स अनदर अटैक. क्वीन वन अटैक नहीं कर रही क्वीन फोर को, तो हम इग्नोर कर देते हैं. क्वीन टू अटैक कर रही क्वीन थ्री को, क्वीन टू अटैक कर रही क्वीन फोर को, प्लस, एंड देन क्वीन थ्री अटैक कर रही क्वीन फोर को, दैट्स 5. तो बेसिकली 5 अटैक्स हो रहे हैं इस पूरे बोर्ड के ऊपर. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हमें क्या करना है इस नंबर को, इसका नंबर को कम होगा तो अच्छा सोल्यूशन है, ज्यादा होगा तो अच्छा सोल्यूशन. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, यू विल रियलाइज जनाब ये नंबर अगर जीरो होगा तो दैट विल बी द सोल्यूशन. यहाँ पे कोई क्वीन दूसरी क्वीन को अटैक नहीं कर रही होगी. सो लेट मी कंजर अप दिस सोल्यूशन फॉर इट. क्वीन वन किसी को अटैक करी, ना क्वीन टू को, ना क्वीन थ्री को, ना क्वीन फोर को, तो दैट जीरो. क्वीन टू अटैक करी किसी चीज को, ना
क्वीन टू को ना क्वीन थ्री को, क्वीन टू ना क्वीन थ्री को अटैक कर रही है ना क्वीन फोर को अटैक कर रही है, और सिमिलरली क्वीन थ्री जो है वो सिर्फ अटैक कर रही है क्वीन फोर को। तो इट्स ओनली वन स्टैक, तो इसकी टोटल वैल्यू जब वन है तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है एच ऑफ एस वन इज फाइव, whereas h of s2 is 1. So we would say janab ke the goodness of s2 is better than the goodness of s1. So if your current state was uh, sorry, so if your current state was s1, so and the neighboring state is s2, then because the s1 is s2 is better than s1, then your current state will become s2, so you will replace your current state with the neighboring state. This is the intuition behind the objective function. Okay, so this is an idea. So again, this is a state of an 8 queen problem, and then you will count कि जनाब कितनी 8 queen problems हैं, and then maybe you will see जनाब के let's अगर आपसे count कर लें तो you will find जनाब के the heuristic value is it's not attacking, it's at 1 attack, 2 attacks, then it's not attacking, 3 attacks, then the third queen is attacking, it's not attacking anyone, the fourth queen is attacking 5 attacks, the fifth queen is attacking no one, sixth queen is attacking no one, seventh queen is attacking no one, eighth queen is attacking. So you get 6 attacks and so on. So you can count it for this board as well, and you can count it for this board, and you can see जनाब के which board has the better value that is given to you. ठीक है, हिल क्लाइंबिंग का की खास बात ये जनाब के इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रीडी लोकल सर्च, एंड व्हाट्स कॉल्ड ग्रीडी बिकॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बेटर वैल्यू। ठीक है, तो ये हमेशा एक बेटर वैल्यू को तलाश कर रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द गुडनेस ऑफ एनी वैल्यू, सो अगेन इट्स ऑलवेज हैव बेटर वैल्यू इन इट्स माइंड। तो जनाब जब भी कोई अच्छा सोल्यूशन मिलेगा तो ये उसको देखेगा, अदरवाइज जो अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा उसको इग्नोर कर देगा। एंड is it complete, and you can see कि why it's not complete. So it's very easy to see. So uh, if I have a local let's suppose janab you have a track like this, and this may be the global maximum, and we maybe have another track like this. So agar aapka solution yahan se start hota hai, then it will go up and will stuck over here. This is the local maximum, and you will not find this global maximum solution. This is why it's not complete. There's no guarantee that it's complete, and then no. And you can see it's not optimal as well, because you will not have any guarantee because you will find the global maximum or not. Okay, however, you can, whenever you get stuck at a local maximum like this one, then you have multiple options to do. For example, you can get stuck in a local maximum पर जब आप किसी local maximum में होंगे, इस position पे you are at a ridge or a plateau. This is what's called a plateau, and ridges are this superimposed local maximum जहाँ पे आप एक जगह दूसरी जगह पे jump कर लेते हैं without having to go down the well, the idea is जनाब you will get stuck in these positions अगर आप hill climbing के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, so so just to give you an example कि जो हमारे पास अभी भी algorithm discuss किया, जो greedy version is called the steepest ascent hill climbing, because you always select values that are strictly better than the value. Strictly better का मतलब जनाब उनकी value जो है वो greater than होगी, not equal to, it's always going to be greater than the value that you have. Okay, तो अगर आप कोई सिर्फ strictly ascending hill climbing को solve यूज करेंगे, then you will for all, अगर आप randomly generate करें n queen problems को, 8 queen problems को, then you will only solve 14% or 14% of the problem in 4%. So so अगर आप 8 क्वीन प्रॉब्लम के सिर्फ 14% सॉल्यूशन जो है वो 4 स्टेप्स के अंदर मिलते हैं, अदरवाइज इट वुड हैव मोर देन मोर वैल्यूज रिक्वायर्ड। अगर हम इसे छोटा सा चेंज करें, जैसे कि हम जनाब हम करंट स्टेट और नेबरिंग स्टेट के अंदर स्वैप्स, जो स्टीपेस्ट असेंट जो है वो सिर्फ तब स्वैप करेगा जब करंट स्टेट जो है वो स्ट्रिक्टली लेस होगी नेबरिंग स्टेट से। हाउएवर अगर हम थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करें और हम अलाउ करें जनाब के सिर्फ लेस देन पे नहीं बल्कि लेस देन इक्वल टू भी स्वैप कर ले, यानी हमें साइड बेस मूव जो प्लेटोज हैं उन पे मूव करने पे हमें आसानी हो जाता है, एंड इवेंचुअली वी विल improve our success to 94%। ठीक है, and this is something that is very very
very useful जो कि हम करते हैं. I'm going to show you an example in a couple of minutes time to show you जनाब किस तरीके से काम होता है. Again, there are some certain variants of stochastic hill climbing. So there's a variant called stochastic hill climbing जो करता है जनाब कि it starts with अगर कोई जो randomly कोई move select कर लेता है, it's much more slower because the stochasticity, it is eventually it will find a better solution. Then there is another improvement called the first choice hill climbing. So it will keep on generating the random successes unless कोई एक बेहतर solution जो है उसको ना मिल जाए. ठीक है, तो again अगर आपकी प्रॉब्लम के मल्टीपल सक्सेसेस हैं then this is a very good variant जो कि आप यूज कर सकते हैं. Then other thing is what you call the random restart. तो अगर आप if you get stuck the what you can do, you can start from another random position, and then eventually if you keep restarting enough times, then there is a guarantee that the probability that it approaches one, that you will find you will find a solution. So they are the variants that exist for the hill climbing. And one other thing that थोड़ी पहले बताया आपको कि जनाब के थोड़ा सा रैंडम रीस्टार्ट, इट्स अ very useful variant for the typical hill climbing or the vanilla hill climbing. So assume hill climbing has a probability of success. Let's say the probability is p. Okay, there's a p percent. There's a p probability, जनाब के, which is p is of course less than the value of p is in this interval. So again, so the probability of success is p, and the expected number of restarts required is about 1 over p. ठीक है, तो this is a very interesting property of random restarts. For example, for 8 clean problem अगर आपकी probability जो है 14% है, okay, so the probability of the p is basically 0.14. It's the same as 14%. So we would require 1 over 14 iterations to find a goal. अगर with random restart 1 over 14 is around it's around 7. ठीक है, the expected number of steps is the cost to success plus this formula and multiply with the cost to failure. Again, this is something that you can look up into. Again, I'm not going to go into the math in this video, but something you can keep in your mind. Okay. So again, if you're using random hill climbing, then there's a chance that अगर आप 3 million क्विन प्रॉब्लम को भी solve करने के लिए जा रहे हैं, it will not take more than 1 minute. There's a high chance you will find a solution very very quickly. ठीक है जी. So कुछ चीज़ें जो कि हम इस वीडियो के आखिर में आपको थोड़ा बताना चाहेंगे ना, आपको जो एनपी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं जिनके वी हैव एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ states and we have no feasible solution, polynomial tile solution हमें कोई भी exist नहीं करता, uh, and it fails hill climbing because it's not moving downwards. ठीक है, तो again eventually if I'm at this is the landscape, and if this is a solution, and let's say that this is the optimal solution, and if I'm over here, then to reach over here, over this point, I have to make some downward steps. Okay, and this is the main reason hill climbing gets stuck in this local maximas because hill climbing does not make these downwards moves. Okay, downward moves करे, then it can escape these local maximas and can up to the global optima है. तो हम इसके लिए क्या करें? Again, we will talk about another algorithm called simultaneous annealing in this next in the next videos. ठीक है. In the next video I'm talk about getting, but let me just show you an example of hill climbing and an applet that shows this example. So in front of you, you can see an applet, and this is applet that you can download from aispaces.org, and they have very useful applets for. So now what I'm going to do, I'm going to load a sample problem, and to demonstration purpose, I'm going to just load this 5 pin problem. So again, we have these. I'm going to come back to this applet a bit later on in the next week's lecture, but just to show you what I'm going to do, I'm going to solve this thing using greedy descent. Greedy descent is the same as local search. So again, what you can see कि जनाब when we start
So we have to initialize हमने क्या किया जनाब कि we start initialize the random solution. random solution क्या है जनाब कि हमने a को 5 कह दिया, e को 3 कह दिया, d को 5. They are the queens by the way. A, B, C, D, E are the queens. A the first queen, B the second queen, C the third queen, D the 5 queen and E the third queen. Again you can see जनाब कि अगर a की वैल्यू 5 है and d की वैल्यू 5 there is a clash. अगर e की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है there is a clash and so on so forth. They are the potential red lines आपको दिख रही हैं, they are the clashes. The number तो you can see you can count कि एक दो एक काउंट कर रही है, दो काउंट कर रहे हैं, तीन चार पाँच, टोटल पांच क्लैशेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. हम करेंगे जनाब कि वी टू फर्स्ट फाइंड अ सॉल्यूशन. तो कि वी सिलेक्ट एनी वैल्यू, ठीक है, और उसको उसकी वैल्यू को जो है वो हमने स्वैप कर दिया, ठीक है. तो अब उसको स्वैप करने के साथ हमने देखा जनाब कि बहुत सारे क्लैशेस जो हैं खत्म हो गए, ठीक है. अब हमने एक और वैल्यू सेलेक्ट करी, उसकी वैल्यू पहले 4 5 थी 4 कर दिया. अब हम देखा जनाब और क्लैशेस खत्म हो गया, तो ई की वैल्यू को चेंज कर दिया. तो कैन बी अगर सारे क्लैश खत्म हो गए सिवाय एक के, तो कैन बी सेलेक्ट अनदर वैल्यू फॉर ई. इसको 1 किया तो एक और क्लैश हो गया. एंड यू कैन सी जनाब दिस इज गोइंग टू हैपन. And eventually, in 8 steps, we have found a solution to the 5 pin problem. Okay, this is what happens when you just make the steepest ascent. Now, let me switch to another algorithm. Again, this is the same. So, we're going to switch into another algorithm. We did with again with random restart. ठीक है, तो हम random restart के ऊपर काम करते हैं. We have saw this random restart. So we initialize these values and we see जनाब कि अगर पहले solution में मिल गया, again we are going to reinitialize it. तो again हम कुछ ज़्यादा steps आ रहे हैं. So again if we get stuck, then because the small problem maybe we will not get stuck, but I will show you in another video that the differences between getting stuck into when we have a large problem. It's not going to be that this graphical because it's very difficult to visualize 500 coins or 1,000 coins. Everybody going to show you this thing in another video. Okay, thank you for watching, and inshallah we'll see some other things in the simultaneously in the next video.